It seems the Congress-led UPA is not having a smooth sailing just ahead of the Lok Sabha elections 2014. Rumblings have already started within the UPA. Its alliance with the National Conference is on a risky wicket, and now NCP is also giving mixed signals. 2 days ago, NCP leader Praful Patel had shown a soft corner for Narendra Modi. And now reports say that NCP chief Sharad Pawar had a secret meeting with Modi on the 17th of January. However, Pawar has refuted the report, and I quote, "News of my meeting with Narendra Modi in New Delhi on January 17 appeared in a newspaper is completely mischievous, baseless and false." Yes, we deny that there has been ever a meeting to discuss any political issues between Mr. Sharad Pawar and Mr. Narendra Modi, as is being claimed in some sections of the media. There has been no meeting between Mr. Narendra Modi and Mr. Sharad Pawar. NCP has rejected any talk of meeting, but BJP got a chance to attack the Congress on this issue. कांग्रेस के साथ कौन रहेगा और कौन कांग्रेस का साथ छोड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहां तक इस मुलाकात का सवाल है, इस बारे में खुद उन्होंने स्पष्ट किया है, तो इस बारे में मुझे लगता है कि कोई और ज्यादा टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। The NCP continues giving conflicting signals with regard to staying in the UPA. हम चाहते हैं कि कांग्रेस और हमारा जो अलायंस है ये कायम रहे, मजबूत हो, और इसको जल्द से जल्द एक हम अंजाम दे, ताकि हम अपने काम पे चुनाव के लिए हम तैयारी में लगे। However, Congress has termed NCP as its trusted ally and is hopeful of NCP being part of UPA. मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस प्रकार की अटकल से। वो हमारे एक गठबंधन के पुराने प्रादेशिक स्तर और केंद्रीय स्तर पे गठबंधन का हिस्सा है, अभिन्न अंग है। हर पार्टी के पास हर विकल्प खुला होता है आखिरी तारीख तक, उनके पास भी हमारे पास भी। ये तीसरी बार है, लगभग 15 वर्ष हो गए हैं, जब ये गठबंधन एक तरफ 10 वर्ष, एक तरफ 12 साढ़े 12 वर्ष प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पे माकूल सिद्ध हुआ है, प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। Praful Patel's recent comments on Narendra Modi have only fanned the fire of speculation over the NCP's BJP leanings. And with the Congress not making the NCP-Congress equation in Maharashtra clear, the question is that the NCP rethinking its alliance, or are these comments simply pressure tactics? With Shailendra Mishra and Ravi Dhiman, Bureau Report, DD News.